Then in Indus Water Treaty 1960, this is a very like active topic. Many questions can be asked, many in many ways. किसी भी तरह किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. So perhaps the most resilient treaty which stood the test of time. Okay, it is that dialogue phase, as I told you. It is dialogue phase of the triple D, and it was adopted in 1960 with the help of World Bank. तो वर्ल्ड बैंक का बस काम था कि 10 साल तक उसका सुपरवाइज करे, उसके बाद आप हमारा कोई मतलब नहीं, यू टू मैनेज द ट्रीटी. ओके, सो इंडस वाटर ट्रीटी पर्टेन्स टू द मोस्ट कंप्लीट एंड सेटिस्फैक्टरी यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर्स इन इंडस रिवर. इसमें क्या चीज है, इसमें क्या करता है, वी डिवाइड द सी बीइंग द अपर riparian state, India has the responsibility to provide बेसिक वाटर फैसिलिटीज टू दी लोअर रिपेरियन स्टेट्स. अपर रिपेरियन का मतलब जहां से जो हायर हाइट्स पे होता है, जहां से पानी आ रहा होता है, और जो लोअर हाइट्स पे होता है उसको लोअर रिपेरियन स्टेट कहते हैं. फॉर एग्जांपल चाइना हमारे लिए हायर रिपेरियन स्टेट है विद रिस्पेक्ट टू ब्रह्मपुत्र एंड इंडस, और हम इंडिया वी विल बी लोअर रिपेरियन स्टेट. So we divided the basin. Sorry, the treaty divided the basin into two parts. That is Western rivers and Eastern rivers. आप ऐसे याद कर सकते हैं, इंटरनेशनल कोस्ट ऑफ जस्टिस, इंडस, chain of Jhelum, the first three rivers in the ascending in the from north to south order. These belong to the Pakistan, and Eastern rivers, that is RBS, Royal Bank of Scotland, or anything you can to remember, Ravi, Bias, and Satluj. Okay. सो व्हाट इज दिस, ईस्टर्न रिवर्स में अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, हम लोग 100% वाटर यूज कर सकते हैं फॉर आवर ओन पर्पसेस, और वेस्टर्न रिवर्स में पाकिस्तान का अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है. ओके, इंडिया हैज, और इन वेस्टर्न रिवर्स, अब जो वेस्टर्न रिवर्स है उसमें भी थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज इट एज नॉन कंजम्पटिव पर्पसेस. नॉन कंजम्पटिव मतलब ऐसा कंजम्पशन ना हो कि उस पानी का फ्लो में डिफरेंस आ जाए, या फिर वो पानी की कैपेसिटी ही कम हो जाए. Because Indus is the lifeline of Pakistan. As I told you, Pakistan is an arid country. So Indus ही उसके लिए perennial lifeline है. It's the backbone of Pakistan. So that's why non-consumptive use का मतलब है we should not build dams के store करने लगे तो वो flow कम हो जाएगा. Okay, but India can build run of the river projects. Okay, जो मतलब चलते चलते पानी में ही छोटे मोटे डैम के प्रोजेक्ट होते हैं, विदाउट स्टोरिंग दी वाटर, जो उसके फ्लो से वी कन्वर्ट द पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी. दैट्स इट, वो मोटर को चला दें, दैट्स इट, नथिंग टू स्टोर. ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो परमानेंट इंडस कमीशन होती है ना. वहां से एक एक इंडस कमिश्नर पाकिस्तान अपॉइंट करता है, एक इंडस कमिश्नर इंडिया अपॉइंट करता है ना. टू परमानेंट इंडस कमीशन जो इस चीज को ओवरलुक करता है, सुपरवाइज करता है. It helps in implementation, that is maintaining the communication and exchange of information and resolving questions. Okay, resolving questions का जो the work of resolving the questions is done by permanent Indus Commission. Then second stage comes जब questions resolve नहीं होते हैं तो differences में वो convert हो जाता है, and differences are actually differences and then disputes. Both the things are managed by World Bank's two bodies, two organizations, that is neutral expert is appointed by World Bank to look after the differences, and the arbitration panel is also appointed by World Bank to look after the disputes. So this is not taken care by PIC but the World Bank. Okay. Significance देख लेते हैं. This is the most important part. Longevity. First is longevity. कि वो इतना लंबा चल गया, वही अपने आप में इतनी बड़ी बात है. Okay. It is the ray of hope in the dark world. Okay. 1950s से 60s में एक्चुअली ये डार्क वर्ल्ड क्यों कह रहे हैं हम लोग, सो बिकॉज 1950s और 60s में वी कैन सी कोल्ड वॉर, मिलिट्री राइवलरीज वी कैन सी, बट वो पूरा उसको दिस इंडस वाटर ट्रीटी हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम एंड मिलिट्री राइवलरीज ड्यूरिंग दैट टाइम. ओके, लाइक एग्जांपल कोरियन वॉर, यूएस इन्वेडिंग वियतनाम एंड यूएस वर्सेस रशिया, पूरा कैपिटल दो ब्लॉक में, दो पार्ट में बट गया था वर्ल्ड. Two superpower blocks, as we call it. One is capitalist block and one is communist block. Secondly,
There was hope for peace and trust. Of course, there's a political significance. Thirdly, prevented war based on hydrology. Okay, as we can see, that third world war, ऐसे speculations हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा वो पानी के लिए होगा. सो हाइड्रोलॉजी के बेसिस पे वी हैव प्रिवेंटेड द वॉर अभी तक. इकोलॉजिकल, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 और 17 में मेंस में कि व्हाट इज द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी. तो इकोलॉजिकल, वी कैन सी दैट इंडस डॉल्फिन इज, many species of dolphin are there, fresh water dolphin, वो साफ पानी में मीठे पानी में ही पनपती है, and that can be divided into few species categories like Irrawaddy, that is in Myanmar, Irrawaddy dolphin, Ganges dolphin, of course that is the aquatic and national aquatic animal of India, and the Indus dolphin, okay, in the Indus River. So this is preserving the species of dolphin. We are not altering the flow, and to prevent the undue pollution, and do not build the dams. Dams बनेंगे तो land subsidence होगा और habitat destruction होगा. So of course this is the ecological benefit of it. उसी समय हम लोग की environmental consciousness भी बढ़ रही थी. As we can see, ये environment का topic है, but as I said, everything has to be linked. तो रेचल कार्सन की बुक थी द साइलेंट स्प्रिंग, 1960s में ये रिलीज हुई थी, and it talked about the ecological damages done due to economic developments. उसके बाद से हम लोगों ने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ 1972 में, देन 1972 में ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया भी आ गया. तो आफ्टर दैट ओजोन, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दैट अकर्ड. ओके, लास्टली सपोर्ट, इट सपोर्ट्स द एग्रेरियन इकोनॉमी ऑफ द पाकिस्तान. मैंने अभी बताया था द फर्टाइल रीजन ऑफ पंजाब, तो वो सपोर्ट करता है, एंड इट इज ऑल्सो द एग्रेरियन इकोनॉमी लाइक इंडिया. ओके, so this you can see as map. Indus is Indus, Jhelum, chain of Ravi, Bias, Satluj. You can see it can be asked in prelims also that Jhelum joins which, Jhelum joins which part? Okay, Jhelum joins the part of Chenab. Okay, Chenab joins the part of Satluj, and Satluj then joins the Indus. Ravi joins the Chenab. Jhelum और Ravi दोनों Chenab को जोड़ती हैं, and these both are tributary of Chenab, but Chenab is the tributary of Satluj, and Satluj is the tributary of Indus. और बियास बच गया तो बियास तो सतलुज से ही बनती है. ओके, चैलेंजेस क्या है ट्रीटी में? इट रिस्ट्रिक्ट्स द इंडियाज राइट्स, बिकॉज वेस्टर्न रिवर्स जो है वो बोला गया है कि सिर्फ नॉन कंजम्पटिव यूजेस के लिए कर सकते हैं. तो डैम, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर है, वो हम लोग यूज नहीं कर सकते, वीक है. तो जो उसका इकोनॉमिक पोटेंशियल है, जो उसका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वी आर नॉट यूजिंग इट. तो वी आर एक्चुअली फोरगोइंग दैट अपॉर्चुनिटी. एंड ऑफ कोर्स ट्रीटी फेवर्स पाकिस्तान. ये भी आर्ग्यूमेंट आता है कि 80% वाटर जो है, जो मेजोरिटी ऑफ 3 रिवर्स, जो ऊपर की 3 रिवर्स हैं, वेस्टर्न रिवर्स, एज आई सेड, आईसी, चे, इंडस, चेनाब, झेलम, दे कंटेन अराउंड 80% वाटर. अब वो चला जाता है पाकिस्तान के पास अगेंस्ट sorry. Thirdly, it hinders the development of Jammu and Kashmir. Of course, this is the same point connected to the previous point. Fourth point, Pakistan's use of technicalities of Indus Water Treaty to prevent India's project on the western rivers. ओके, सो मतलब ये है कि वी यूज टेक्निकलिटीज कि डैम नहीं बनाओ, रन ऑफ वाटर प्रोजेक्ट अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा बन गया तो उसको भी बंद करो. तो इट यूजेस दैट टेक्निकलिटीज. ओके, तो यही चीज हम लोग यूज कर सकते हैं. वेदर क्वेश्चन जो आता है कि वेदर द ट्रीटी शुड बी रिवोक्ड और नॉट, तो दीज लिमिटेशंस कैन बी, these challenges to the treaty can be written as a part of yes, it should be revoked, but you should write the both sides of the argument in an answer. कभी भी yes और no में जवाब नहीं देना पड़ता है. We should take always the middle path, जो कि बुद्धा का नियम है. श्री 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 गौतम बुद्धा, श्री 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 गौतम बुद्धा. हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए, इफ दे आर फोकसिंग ऑन माय लेक्चर, अगर वो देख रहे हैं तो उनके लिए मध्यम मार्ग. So this is the thing. Limitations, as I told you, these the above point can be taken here. And Pakistan continues to enjoy the rights without duties. कोई responsibility नहीं है उसके पास, बस वो enjoy कर रहा है the using of water. और International Court of Justice ने भी ये कहा कि if fundamental circumstances change, treaty may change. So we can modify the treaty according to the changing circumstances. Okay, but no, we should not revoke. बस के क्या favor में arguments हैं.
तो ये एग्जाम सीएपीएफ में भी पूछा जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस और नो बोथ आर्ग्यूमेंट शुड बी टेकन, और लास्टली आपका क्या स्टैंड है। तो फर्स्ट इज दैट अगर आप ये चीज करेंगे तो चाइना भी वही चीज ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ कर सकता है, दैट ब्रह्मपुत्र इंडस दे आर ओरिजिनेटिंग इन द टिबेटन प्लेट्यू, दैट इज द पार्ट ऑफ चाइना, ऑटोनोमस पार्ट ऑफ चाइना, एंड इट विल बी डेट्रीमेंटल इन इंडिया की इमेज को दिक्कत होगी, जो बाकी जो नेबर्स हैं जैसे बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, बांग्लादेश हो गया एंड दी नेपाल, भूटान, दीज विल नाउ उनका जो बिग ब्रदर सिंड्रोम है वो बढ़ जाएगा, है ना, कि बड़ा भाई ऐसा कर रहा है, उसके साथ तो हमारे साथ भी कभी भी कर सकता है। सो इट विल बी डेट्रीमेंटल टू इंडियाज इमेज. It would give the Pakistan reason for protected war on the pretext that India poses existential threat. जब ये चीज कर लेगा तो ऑफ कोर्स मिलिट्री और स्ट्रांग हो जाएगी, उसको और रीजन मिल जाएगा, जो ट्रस्ट है वो और बढ़ जाएगा कि हाँ ठीक है, वो मिलिट्री जो थी वो सही कह रही थी कि हाँ एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इंडिया है हमारे लिए, एंड एज आई टोल्ड यू बिग ब्रदर सिंड्रोम बढ़ जाएगा, एंड इट विल अफेक्ट द राइट्स ऑफ पीपल। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, एथिकल ग्राउंड्स में भी वो गलत है, और टेक्निकली वो फिजिबल है ही नहीं, कि बिकॉज वाटर इज एक्चुअली द कॉमन रिसोर्स, इट्स द रिसोर्स ऑफ एवरीबॉडी, सभी यूज कर सकते हैं उसको, वो किसी एक इंसान का रिसोर्स नहीं है। तो ऑल्सो वी कैन नॉट स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर, सो वी शुड नॉट डू दैट। तो हम लोग ने देखा कि इसके रिवोक करने के कॉस्ट ज्यादा हैं, बेनिफिट कम है, तो वी विल नॉट रिवोक। तो हम लोग कैसे परसुएट करेंगे पाकिस्तान को? सो वी विल ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ ईस्टर्न रिवर्स जो हमारे पास है, ईस्टर्न रिवर्स को वी विल यूज द इवन द लास्ट ड्रॉप ऑफ इट, जैसे हम लोगों ने काफी प्रोजेक्ट्स करे हैं, उज डैम, सतलुज बियास लिंक प्रोजेक्ट एंड शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट, these are some projects which are being built on eastern rivers, especially ravi bias and satluj. And secondly, we can expedite the implementation of announced project like kishan ganga, which is the chena project. This is the run of the river project. As I told you, we cannot build dams, but we can build the run of the river projects, जो कि छोटे होते हैं डैम से, we can without any aquifer, जो स्टोर करने के लिए कुछ उसमें होता नहीं है. And Article 12 Clause 3 of the Indus Water Treaty says that treaty can be mutually modified, और International Court of Justice ने भी वही चीज कही थी कि अगर circumstances change होते हैं तो it can be changed. Okay. Then ये मैंने एज अ फैक्ट लिखा हुआ है, दिस यू कैन अंडरस्टैंड दैट जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको दो पार्ट में यू कैन सी दैट दिस इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, एंड यू कैन सी द टू पार्ट्स ऑफ इट. फर्स्ट इज गिलगित बाल्टिस्तान, उसको पहले नॉर्दर्न एरियाज कहते थे, दिस इज एक्चुअली प्री स्पेसिफिक, प्री में आ सकता है. गिलगित बाल्टिस्तान इट इज ऑल्सो अ सेमी प्रोविंस, मतलब थोड़ा सा ऑटोनोमस है, लाइक यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है ना, जैसे यूनियन टेरिटरीज को हमारे इंडिया में रहती है, वैसे एक टाइप का यूनियन टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान है गिलगित बाल्टिस्तान. एंड द सेकंड विल बी आजाद कश्मीर, उनके लिए वो आजाद कश्मीर है ना, वो इंडिपेंडेंट टेरिटरी, उन्होंने दो को डिवाइड कर दिया है, दो पाकिस्तान दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है. सो दिस विल बी आजाद कश्मीर एंड दिस विल बी गिलगित बाल्टिस्तान. ओके, बट दिस होल इज द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और यूएन और बाहर के जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो उसको पाकिस्तान एडमिनिस्टर्ड कश्मीर कहते हैं, है ना, PAK, बट वी विल से, वी विल राइट, वी विल फील ओनली द POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, हम लोग यही कहेंगे हमेशा. लास्टली वी कैन सी द लो हैंगिंग फ्रूट्स जो अचीवेबल हो सकते हैं. फर्स्ट इज सियाचिन एंड द सेकंड इज सर क्रीक. ओके, सियाचिन में मैंने बताया था आपको कि एक साल्टोरो रिज है वेयर देयर इज एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन. दिस साल्टोरो रिज इज वेयर आर ट्रूप्स आर स्टेशन, जहां से वो निगरानी रखते हैं, और ऑपरेशन मेघदूत हुआ था जिससे कि वी रिकैप्चर्ड सियाचिन फ्रॉम द पाकिस्तान. एंड the demilitarization of Jammu and Kashmir. Okay, Siachen Glacier region is this. I have written. Just listen to me carefully. Siachen Glacier region is strategically significant, and since 1984, India has maintained control over the area. However, since the late 1980s, the issue of demilitarization has been formally and informally raised between India and Pakistan. It has been observed that both sides have considered the possibility of demilitarization as a step towards normalization. As I told you, normalization matlab cooling off the dispute step by step gradually. So इसके तीन बड़े बड़े कारण हैं जो ये चीज हमें डिमिलिटराइज करना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स कॉस्ट ज्यादा होती है, बी देयर इज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइव्स. और एक डेटा था जिसमें ये लिखा हुआ था कि द लॉस ऑफ लाइफ इज नॉट ड्यू टू एक्चुअली
the fights, actual fights उसकी वजह से नहीं था, but the avalanches, okay, the disasters which occur and other reasons like food, sanitation and water. फूड वूड वहां पहुंचाना, उसका टेम्परेचर -40 -50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो भी सैनिटेशन एंड वाटर वाटर भी फ्रीज हो जाता है, दैट इज अ प्रॉब्लम देयर। ओके, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में सियाचिन ग्लेशियर्स के ट्रूप्स हमारे जवान वहां पर सफर करते हैं, एंड वी शुड बी हाईली ऑब्लाइज्ड देम कि हम लोग वी आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय देम। ठीक है। सेकेंडली, हाँ इकोनॉमिक कॉस्ट भी है कि ऐसा बोला जाता है, बट इकोनॉमिक इज नॉट नेसेसरी बिकॉज हाँ ठीक है, वो मिलिट्री बॉर्डर में इंपॉर्टेंट है उनको रखना, and of course it will build trust. So as I told you, the CDP, that is the comprehensive dialogue process, the issue discussed, but there was no breakthrough about the what about the demilitarization of Jammu and Kashmir. क्यों? क्योंकि there is always the lack of trust between the two parties, fundamental difference over the method of demilitarization, and CDP itself broke down due to political changes in Pakistan and continued state-sponsored terrorism, जो कि 2008 में it broke down. So it can be argued that though there are valid reasons for supporting the call of demilitarizing Siachen or Jammu and Kashmir, but under prevailing circumstances, such breakthrough not possible. In future, the demilitarization will depend upon cessation of terrorism and increasing communication between the India and Pakistan. So the following methods, that is the way forward which India can take, is demarcating actual ground position line on the ground and on the map, a joint verifiable, concrete agreement between the competent authorities from the both sides, Pakistan as well as India, and of course redeployment. जब हम लोग कोई negotiate करेंगे तो जो यहाँ के forces हैं वो पीछे हटें, तो redeployment, ये पाकिस्तान के forces और ये इंडिया के forces redeploy कर दें कहीं और एरिया में, तो उसका भी negotiation होना चाहिए। सो दिस इज थिंग, कारगिल वॉर जब हुआ था तो इंडिया ने बिकॉज ऑफ हार्श विंटर्स भी एक्चुअली कि हाँ ठीक है ट्रस्ट करने की कोशिश करी भी थी, लेकिन उसने ट्रस्ट तोड़ दिया था। इट ट्राई टू ऑक्यूपाई द सियाचिन, कारगिल वॉर, ड्यूरिंग द कारगिल वॉर 1999। लास्ट इशू अबाउट सर क्रीक इशू, तो इसको भी क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं। व्हाई इज द सर क्रीक डिस्प्यूट कंसीडर्ड एज लो हैंगिंग फ्रूट? क्यों लो हैंगिंग फ्रूट कहा जाता है? लो हैंगिंग, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके। तो सर क्रीक इज 96 किलोमीटर एस्टुअरी। ओके, एस्टुअरी इज डिफरेंट फ्रॉम डेल्टा। ओके, एस्टुअरी जो होता है वो इट हैज द स्टीप स्लोप, है ना, स्टीप स्लोप होता है और पानी यहीं तक आता है, बट डेल्टा इज लाइक दिस, और पानी यहाँ तक आता है। सो इट इज अ स्टीप स्लोप, इट इज एन एस्टुअरी, सो it is strategically located between the Sindh region of Pakistan and the Gujarat region of India. Okay. The demarcation remains pending but being negotiated since 1990s and was included in the CDP. Again, comprehensive or composite dialogue process, surveys and map exchanges have occurred, and when last round during the 2012 occurred, both expressed the desire to resolve the issue at the earliest. Thus, given the long period of negotiation, exchange of documents, that's why low hanging fruit. तो इतने एक्सचेंज हो चुके हैं, फिनिशिंग टच ही देना है बस, इसलिए उसको लो हैंगिंग फ्रूट कहा जाता है। तो रेड लाइन, इसमें दो लाइन होती है, रेड लाइन और एज यू कैन सी दिस इज रेड लाइन and this is green line. Okay, so green line, as you can remember by the Pakistan map, which is green, so it is claimed by Pakistan, and this red line is the claim of India. Okay, because we see, because this is in the middle, red line is going to the middle of the channel, so middle of the channel we are actually complying with the international principle. तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसका जो प्रिंसिपल होता है थालविक प्रिंसिपल, ओके, थालवेग प्रिंसिपल, कि कोई भी जो द डीपेस्ट पार्ट, जो डीपेस्ट पार्ट जनरली मिडिल ऑफ द कोई बॉडी में होता है, कभी उसके बीच में होता है डीपेस्ट पार्ट, तो उसी को ही एक बाउंड्री मान लिया जाता है। तो इंडिया ने इंटरनेशनल प्रिंसिपल को कंप्लाई किया हुआ है, बट दिस पाकिस्तान वांट्स दैट नो, दिस शुड बी हियर, it should be extended till India. So that is problematic because this whole area then will be with Pakistan and it is very rich in resources, and also it will be very close to India. So the red line, as I told you, boundary should be in the middle of the channel cause navigable body of water. कोई भी navigable body of water होती है जहाँ पर हम लोग navigate कर सकते हैं, हमारे boat जा सकते हैं. So it will be ruled by the principle of Thalweg, and in 1914 also
and British government order and also some maps dating back to 1925. अब इसका interpretation different different है लोगों का. This was interpreted differently by India and this was interpreted differently by Pakistan. Okay, तो पाकिस्तान को लगा कि ग्रीन लाइन ही ब्रिटिशर्स बात कर रहे थे and it calls it as marshy land. Marshy area है, estuary है and it is not navigable. That's why the principle of Thalweg will not apply. तो जो मिडल वाला पार्ट है वो नहीं अप्लाई होगा और हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो डॉक्यूमेंट्स है उसको देखेंगे तो ग्रीन लाइन इज आर बाउंड्री लाइन. सो तो रेजोल्यूशन क्यों डिजायरेबल है? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स देयर विल बी मैरीटाइम बाउंड्री डेमार्केशन. उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि फिशिंग कम्युनिटी सेफ हो जाएंगी because there are instances of arrest of the fishermen by both sides of violating their maritime space and it will bring clarity and ease of living for such community. Development of resources in the region, of course it is having the hard because pani ka region hai so it will be having the large hydrocarbon reserves, this hydrocarbon reserves. And resolution would help in strengthening the coastal and maritime security. Maritime security, as we know, it is important to prevent the pirate attacks, to prevent the uh, reiteration of attacks like Mumbai 2008 attacks, and the of course this region is close to the drug trafficking hotbeds. Okay, that is transnational organized crime. Drug trafficking, as we can see, drug trafficking can be done. India is actually sandwiched between two types of drug trafficking regions. One is Golden Crescent, consisting of Iran, Afghanistan, and Pakistan, and the second one is Golden Triangle. It is in the form of triangle. First is Myanmar, second is Thailand, and Laos and Vietnam. Okay, so Kulbhushan Yadav case, it is like older case but still going on and 2016 में उनको अरेस्ट एज अ स्पाई कर दिया गया था, है ना. और मतलब स्पाई उनका क्लेम है बट इट वाज abducted from Iran. He was abducted from Iran and it was basically the main motive was to tarnish the image of इंडिया की जो इमेज थी, जो प्रतिष्ठा थी वो कम करना, बिकॉज इससे इंटरनेशनल कम्युनिटी को लगेगा कि इंडिया स्पाई कर रहा है, स्पाइंग नेशन है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी. तो दैट वाज द मेन motive of the Pakistan while capturing or while kidnapping the Kulbhushan Yadav sir. So in 2017 इंडिया अप्रोच आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ऐसे कोई भी नहीं जा सकता इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. अब बहुत बड़ा इशू होगा तभी जा सकते हैं, वरना हर कोई चला जाए पाकिस्तान, वो चला जाए अपने कोर्ट को छोड़कर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जा रहा है. So what it did was it stayed the execution. जो भी अब कुलभूषण यादव का execution because he was allegedly spying on Pakistan's ISI. So it the court of Pakistan held that he should be executed. But India approached ICJ and said no, he should not be executed. But as you can see International Court of Justice की जो advices होती हैं वो advisory nature की होती है. It is not actually meant to, it is not mandatory, okay, because it cannot take the sovereignty of nation. Sovereignty of nation is the first principle of any modern nation state. So it was the और ये हुआ कि किस बेसिस पे हम लोग पहुंचे थे वहां पर, कि हम लोग इसलिए पहुंचे थे कि पाकिस्तान हैज डिनाइड द राइट ऑफ consular access or right to diplomatic access of the people. That is also called Vienna Convention on Diplomatic or Consular Relations. So it was a treaty which was defied by Pakistan क्योंकि consular access भी नहीं मिल रहा था. लेकिन later तो Pakistan provided the lawyer to Kulbhushan Yadav sir and current status is that it is still the matter is sub judice और अभी भी उनको release नहीं किया है. So options available can be approach ICJ, seek clarification. फिर से ICJ के पास जाए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उनसे क्लैरिफाई मांगे, क्लैरिफिकेशन मांगे. Or we can approach United Nations Security Council, but China has the veto. It is the permanent member there. It has the veto power, so it's going to be hardly be any success there. And ideally, ये होना चाहिए कि Pakistan should release him like it did with Abhinandan case. Okay, so these are the things. Lastly, we will talk about CPEC. It's the part of BRO, Border Road. Sorry, not Border Road. Belt and Road Initiative. It is the China-Pak Economic Corridor. सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हाउ द एक्सटर्नल एक्टर्स अफेक्ट इंडियाज इंटरेस्ट. ओके, सो it is actually regions extending from Kashgar. Kashgar is a region, is a province in
चाइना, वहाँ पर उइघुर मुस्लिम्स रहते हैं और वहाँ पर भी ऐसा क्लेम है कि जो उइघुर मुस्लिम्स हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा है चाइना। तो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। एंड इन ग्वादर, एज़ वी कैन सी, ग्वादर इज़ अ पोर्ट close to Chabahar port. So $65 billion will be invested by China. So Pakistan may benefit because of the poor growth. अब उसको इन्वेस्टमेंट कहीं से भी पैसा मिलेगा तो वो मांग ही लेगा ही। वो हाथ फैलाया रहता है, कुछ भी दे दो कोई भी, तो इट विल ही विल पाकिस्तान विल टेक इट। और उसको हाईवेज पावर स्टेशन बनाने के लिए दिया गया था, बट इट विल बेसिकली यूज इट फॉर इंक्रीजिंग द डिफेंस। वो अपने लोगों के हेल्थ और एजुकेशन के लिए नहीं स्पेंड करता है, बट टू बिल्ड दी डिफेंस एंड मिलिट्री। तो मारा मारी है भूख। सो इम्प्लीकेशन ऑन इंडिया, इस चीज का क्या इम्प्लीकेशन है? इट वायलेट्स द सोवरेनिटी, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान is POK region. Okay, POK region, but it is naturally the part of India, so it is violating the sovereignty. उसी से पास कर रहा है, and it may create the regional instability as evident in Baloch insurgency. बलोच इंसर्जेंसी, एज वी कैन सी, बलूचिस्तान के लोगों के लिए स्पीच भी दी थी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कि इट डू नॉट सीम टू बेनिफिट फ्रॉम सीपैक। कोई इसका बेनिफिट नहीं हो रहा है सीपैक से, एंड जो कि बेनिफिट जो भी हो रहा है दैट इज being concentrated by the rich elites and the Chinese. Okay, so Baloch people, they are actually poor, unemployed, and they are not actually benefiting from it. Thirdly, what can be the implication on India? So Chinese stronghold ban jayega. As we can see, it is doing the debt trap, checkbook diplomacy. The same thing which it did with Sri Lanka, the Hambantota port. श्रीलंका के पास अमरटोटा पोर्ट था जो लीज में दिया गया था चाइना को, सॉरी लीज में दिया गया था, लीज्ड टू पाकिस्तान, सॉरी लीज टू श्रीलंका फॉर 99 ईयर्स। बट लीज का मतलब है रेंट पे एक दे दिया था, मतलब उसके लिए चाइना ने फंडिंग करी थी, बट इट वाज लाइक अ लोन, बट इट हैज टू बी रिपेड इन 99 ईयर्स, और वो नहीं कर पाया, तो हम्बनटोटा पोर्ट को चाइनीज लोगों ने अपना कब्जा बना लिया, वहां पर मिलिट्री प्रेजेंस रख लिया। सो लास्टली, ग्वादर पोर्ट एज स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड इन इंडियन ओशन रीजन। ऑफ कोर्स ग्वादर पोर्ट को भी स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड बना लिया है, विच चाइना सेज दैट वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए, ट्रेड पर्पसेस के लिए यूज करेगा, बट इट इज एक्चुअली मिलिट्री पर्पसेस, वी कैन सेंस इट। सो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? It is necessary to raise the issue in all relevant multilateral forums. ये हर इशू के साथ है। India must strengthen its relations across Indian Ocean region through Quad and Sagar security and growth of all in the region initiative, and invest like in the Chabahar port like things. Okay, ओमान जैसी जगह में भी, आप येमेन जैसे जगह में भी इसको आप, इंडिया शुड सेंड मिलिट्री फोर्सेस और नेवी ड्रिल्स, तभी एक्सरसाइजेस करता है इंडिया इन लोग के साथ, मिलिट्री एक्सरसाइजेस आर देयर, so that we can control this area, or we can prevent this area from being fallen into the hands of Chinese. So this is the thing, and about the FATF दे देख लीजिए। Lastly, FATF, Financial Action Task Force, it was actually formed in 1989, and it is having its headquarter in Paris, which is also the headquarter of OECD. And G7, G7 is the institute, is the group of the elite and the rich countries. Okay, इसमें 7 countries हैं plus EU, European Union. So FATF was made by G7. Remember, it is not made by OECD, it is made by G7, but उसका जो headquarter है वो पेरिस में है, तो this is important for prelims. So it was actually, इसका main motive है terror financing और money laundering को देखना, and to prevent the proliferation of finances. It gives recommendation, बस recommendation देता है, ऐसी उनकी recommendation mandatory नहीं है। एंड देयर आर 9 उसके रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं, रीजनल बॉडीज हैं, उसमें से 2 ग्रुप्स हैं, यूरेशियन ग्रुप्स और एशिया पैसिफिक ग्रुप, जिसमें इंडिया पार्ट है। 2 ग्रुप्स में इंडिया पार्ट है और एक ग्रुप में, दैट इज एशिया पैसिफिक ग्रुप, जिसमें पाकिस्तान पार्ट है। सो दिस फोरम कैन बी यूटिलाइज्ड टू हैव डिप्लोमेटिक टॉक्स।
सो व्हाट इट डज इज म्यूचुअल रिव्यू होता है, इट आइडेंटिफाइज द स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसीज की क्या कमी है आपके देश में, इकोनॉमिक सिस्टम में, जिसकी वजह से टेरर फाइनेंसिंग हो सकती है, तो इट आइडेंटिफाइज दैट. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिस्ट इन दिस थिंग, ग्रे लिस्ट एंड द ब्लैक लिस्ट. अभी रिसेंटली देखा हम लोगों ने कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से हट गया बिकॉज इट हैज कंप्लाइड विथ ऑल दी आइटम्स विच FATF सेज. उसने कंप्लाई कर लिया, उसने काफी टेरर फाइनेंसिंग को रोका अकॉर्डिंग टू इट. सो इट वॉज रिमूव फ्रॉम ग्रीन लिस्ट. लेकिन एक नया कंट्री आ गया म्यांमार, जो कि ब्लैक लिस्ट में आ गया. ईरान, नॉर्थ कोरिया तो परमानेंटली ब्लैक लिस्ट में रहते हैं. नॉर्थ कोरिया तो डार्केस्ट लिस्ट में रहेगा, कभी भी ये नहीं निकलने वाला. बट म्यांमार, बिकॉज ऑफ द कूप, द मिलिट्री कूप, इट केम इनटू द ब्लैक लिस्ट. अब क्या इसके प्रॉब्लम्स होते हैं? ग्रे लिस्ट में अगर जाएंगे तो इकोनॉमिक सैंक्शंस हो सकते हैं, प्रॉब्लम गेटिंग लो, क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी, ऑफ कोर्स क्रेडिबिलिटी कम हो जाएंगी, एंड देयर विल बी इंटरनेशनल बायकॉट, रिडक्शन इन इंटरनेशनल ट्रेड. क्रेडिबिलिटी कम होगी तो ये सब होगा. और ब्लैक लिस्ट में तो वही है, जो कोऑपरेट नहीं करते हैं तो उनके साथ तो कुछ भी नहीं होगा ये सब. ओके, इट विल बी रिड्यूस टू जीरो. कम नहीं, सैंक्शन नहीं, सब कुछ जीरो हो जाएगा, कुछ कोई भी ट्रेड नहीं होगा इनके साथ. So as I told you, Pakistan was removed and Myanmar was added to the black. It was earlier in gray. And February 2023 अभी क्या हुआ है, रशिया की मेंबरशिप सस्पेंड हो गई है. तो दिस इज important for prelims. So what can be the way forward all over? So this is way forward all over. So structural factors are difficult to solve. Changes in Pakistan internally, that is डिफिकल्ट टू ब्रिंग डेमोक्रेसी देयर, है ना. तो वो अपने आप से चेंज करेगा, अपने आप से कॉन्शियस आएगा उसके. उनके लोग ही इतने कॉन्शियस ट्रस्ट नहीं करते हैं सिविलियन लीडरशिप को. वो दे ओनली ट्रस्ट द मिलिट्री एंड दे ओनली ट्रस्ट द एंटी इंडिया इमेज. तो वो तब तक वो डेमोक्रेसी स्ट्रेंथ नहीं होगी वहां पर. सो we can take two options, soft power and hard power. Hard power, I told you in the previous lecture that it is the power of coercion, and soft power is the power of attraction. तो हार्ड पावर में वी कैन यूज द इंक्रीज. उनके कॉस्ट, उनके जो मिस एडवेंचर है, उनका जो ये तरीका है बार बार इन्फिल्ट्रेट करने का, उसी की कॉस्ट को बढ़ा दिया जाए. टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ दैट, मतलब उनकी कॉस्ट इतनी बढ़ा दी जाए कि वो ही खुद सोचने लगे कि नहीं नहीं, इसमें ज्यादा खर्चा हो रहा है. सो वी शुड स्टॉप दैट. डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, एज आई टोल्ड यू, in the international forums we should raise the issue, especially of human rights violation of Baloch, and in China's case we can say the Xinjiang region. Okay. And of course this is always military preparedness and border surveillance. And as Prime Minister earlier talked about the Gilgit Baltistan, that we should always talk about Gilgit Baltistan, and we should, like WMO bulletin weather forecasting, we should care about Gilgit Baltistan, and we should, as we say कि it is going to become the fifth province. तो उनको उसको फिफ्थ प्रोविंस नहीं बनना है. अगर ये बन गया तो फिर वो चाइना का CPEC भी पास कर जाएगा इससे. तो और वी हैव ऑलरेडी रिवोक्ड द MFN स्टेटस. सो और सॉफ्ट पावर्स में क्या हो सकता है? दैट इज द पावर ऑफ अट्रैक्शन, द पावर ऑफ परसुएशन. सो द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टॉक्स, दैट इज डिप्लोमेटिक ऑप्शन. बात करें, आओ बैठे हैं बात करें, तो दैट इज द थिंग विच इज ऑलरेडी गोइंग ऑन. एंड कभी कभी कहा भी जाता है कि नवाज शरीफ को वापस प्राइम मिनिस्टर बना दिया है बिकॉज ही इज द बिजनेसमैन, एंड एनी बिजनेसमैन वुड अवॉइड द इंस्टेबिलिटी. इट विल वांट स्टेबिलिटी, क्योंकि इंस्टेबिलिटी कोई भी ट्रेड और बिजनेस को हार्म करती है. And of course, cultural exchanges like Kartarpur Corridor. Kartarpur Corridor is the proposed border corridor between the India and Pakistan, connecting the Sikh holy shrine of Dera Baba Nanak Sahib, which is in India, to the holy shrine of Kartarpur Sahib, which is in Pakistan. So this is the visa-free type of thing, but it can be only group में जो Sikh के group में जाते हैं, they can pass the border without any much issue and without any visa. Okay, so this is the thing. Next topic will be India Afghanistan. Thank you and be safe.